নমস্কাৰ সো আজি আমি ক্লাস 12 ফৰ স্পেশাল টপিক এটা ডিসকাশন কৰিব গৈ আছো দিস ইজ ৰিলেটেড টু ওয়ান চ্যাপ্টাৰ ইনকাম ডিটাৰমিনেশন ক্লিয়াৰ সো আই নিৰ্ধাৰণ বা ইনকাম ডিটাৰমিনেশন চ্যাপ্টাৰ এটা স্পেশাল টপিক আমি ডিসকাশন কৰিব গৈ আছো দিস ইজ হোৱাট ৰিলেশনশিপ কাৰ ইন বিটুইন ইনভেষ্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়াৰ এণ্ড এমপিসি মিন্স বিনিয়োগৰ গুণক আৰু প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতাৰ মাজৰ যেটো সম্পৰ্ক ডেৰিভেশন কনসেপ্ট সো সেই বস্তুটো লৈ পেলাই আমি ডিসকাশন কৰিব গৈ আছো ৰিলেশন টু কাৰ ইনভেষ্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়াৰ এণ্ড এমপিসি ওকে তেতিয়াহ'লে বল আমি আৰম্ভ কৰো relationship car K or MPC K nothing but investment multiplier and MPC nothing but marginal propensity to consume clear so now K is what K is investment multiplier okay so investment multiplier so investment multiplier nothing but K and this is nothing but delta Y by delta I so it is the investment multiplier of formula definition or GTM formula pa hoyto so investment multiplier nothing but the ratio of change in income due to change in investment and MPC nothing but what delta C by what delta Y and that MPC nothing but the slope of the consumption curve okay so eti ei dutar major jeto relation সেই relation to ami established korim through derived okay তেতিয়া হলে सोआ केने का रिलेशन तुम्हें पाओ सो मैं बोलना चाहता हूँ ये जो दो कॉन्सेप्ट है ना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड व्हाट एमपीसी ये दोनों के साथ रिलेशन क्या है मैं हिंदी में भी थोड़ा बोलूँगा इंग्लिश में भी बोलूँगा असमीज में भी बोलूँगा ताकि हर स्टूडेंट को बेनिफिट हो क्लियर तो अभी पहला बात ये है ऑलरेडी वी नो सॉल्यूशन ओके ऑलरेडी वी नो in equilibrium y is equal to c plus I because in equilibrium we know s is equal to y is equal to c plus I and that c plus I nothing but ad means s is equal ad clear now this is equation 1 clear after that if we change delta y then definitely c also changes I also changes if income increases by delta then क्या होगा delta y is equal to delta c plus delta I clear so this is equation 2 इसका मतलब y is equal to c plus I in equilibrium after that income अगर चेंज होगा तो ये दोनों भी चेंज होगा क्लियर सो ये इक्वेशन 2 डाल दिया आफ्टर दैट इफ वी divided both sides by delta y we get delta y by delta y is equal delta c plus delta I is equal इसके बाद होगा delta y मतलब delta y by delta y delta c plus delta I by delta y because we divided both sides by what delta y clear after that क्या होगा मैं ऊपर इतना omit कर देता हूँ आफ्टर दैट क्या होगा अभी इसको तुम सेपरेट कर लो डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई नथिंग बट 1 इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई इधर से आया ओके प्लस डेल्टा आई बाई डेल्टा वाई क्लियर आफ्टर दैट दिस इज 1 दिस इज एमपीसी सो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई इधर आ गया इधर रह गया डेल्टा आई बाई डेल्टा वाई क्लियर
After that 1 minus delta C by delta Y, nothing but MPC, means delta C by delta Y, nothing but MPC, is equal delta I by delta Y. Clear? After that, okay, आफ्टर दैट अगर इसको तुम इनवर्स कर लो तार माने एटुक যদি তুমি উল্টাই দিয়া তেতিয়ালে হৈ যাব 1/1 মাইনাস এমপিসি এফালে এটু উল্টি যাব হৈ যাব ডেল্টা y বাই ডেল্টা i आफ्टर दैट 1/1 minus MPC is equal to this is what k means delta y by delta I, nothing but k. Clear? So finally ami palu means we get finally we get what k is equal to 1/1 minus MPC. Clear? So this is the final solutions and relations in between investment multiplier and MPC. এই যেটো রিলেশন তুমি পালা কার investment multiplier আর MPC, always remember here investment multiplier and MPC both are positively related. That means if MPC in an economy increases, then value of investment multiplier also increases. If MPC decreases, then value of investment multiplier also decreases. That means what? In an economy, if MPC increases, investment multiplier also increases, because investment multiplier k is equal to what? Reciprocal of 1/1 minus MPC, means k and MPC major relation to positive. Okay, if MPC decreases, then value of k also decreases. Clear? The overall concept for a bostuto palo what সদায় মনত ৰাখিবা in an economy if MPC increases, then k also value of k also increases, economic income also increases. If MPC decreases, value of k also decreases, economic income or output also decreases. So this is the final relations in between MPC and investment multiplier, means marginal propensity to consume or k means investment multiplier or relation always positive, and that relation korpora ulai formula jito me derive kori finally palu hetu hoise k is equal 1/1 minus MPC. In that equation what we see here, relations between MPC and investment multiplier is always positive. Okay, thank you.